Hello and welcome back to this channel. Dear students, today's topic is state transition matrix. It is the topic from the subject control systems. In earlier videos of this particular unit, that is state space analysis, we have derived the expression of transfer function for the state space model, in which we had this equation Si minus A raised to minus 1. Actually, it is the matrix inverse. If you take Laplace inverse of this, we have already derived this expression. If you take Laplace inverse of this, it is denoted by phi of t, and phi of t is called state transition matrix. It is also given as e raised to at. Now, from the exam point of view, properties of phi of t are important. So, first property is phi of 0 is equal to e raised to 0, that is equals to 1. How come? Because see, notation is phi of t. I am writing phi of 0. That means I will have to put t is equals to 0. So in this equation, if I will put t is equals to 0, you will get e raised to 0, and e raised to 0 is 1. Second property is phi raised to minus 1 of t. That is phi inverse of t is equivalent to phi of minus t. Third is, if I have two time instants t1 and t2, then phi t1 plus t2 is equals to phi t1 into phi t2. Fourth, phi of t raised to n is same as phi of nt. Fifth property, phi t2 minus t1 into phi t1 minus t0. Again, t0, t1, t2 are some time instants. It is same as phi of t2 minus t0. And last, phi of t is non-singular matrix. Apart from this, numericals are also quite important as far as this state transition matrix is concerned. The given problem is obtain state transition matrix for the system. This is the given equation of system. Now, in the given equation, we have x dot is equals to this matrix into x. So, this given matrix is considered as matrix A. Now, do remember what we have to do. हम लोगों को Si minus A inverse ये मैट्रिक्स तैयार करना है. अब this is the matrix of size 2 rows and 2 columns. So I will consider identity matrix of same size, that is 2 rows and 2 columns. Therefore, I can write S into I is equals to S0 0 S. Now I want Si minus A, which is equals to, just now I explained you, this is the given matrix for A. This is matrix Si minus A. So this term is S minus this first term 0. So it becomes S. Then second term, this is 0. Here second term in the first row is 1. So it becomes minus 1. We are subtracting this matrix A from Si. So 0 minus 1, that is minus 1. Then third term is 0. This is also 0. 0 minus 0 is 0. Then this term is S. This term is minus 2. We are subtracting it. So S minus of minus 2. It becomes S plus 2. Now, we have already studied it in earlier videos how to take inverse of this matrix. This is a matrix for Si minus A. To calculate inverse, I need to calculate adjoint of this matrix. That is Si minus A. Adjoint of Si minus A. Recall the rules what we have studied earlier. ये जो दो elements है ये interchange करना है. So I will write S plus 2 and this element is S. ये दो elements interchange करना है और बाकी जो दो elements है ये वाले इनका sign change करना है. So this becomes plus 1 and this is 0. 0 का कोई sign नहीं है, so I am keeping it as it is. ये minus 1 था, इसका plus 1 बना दिया. So this is adjoint matrix. Then I also know should calculate the determinant of Si minus A. यहाँ पे Si minus A मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. सो इट विल बी S इंटू S प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 0. सो इट बिकम 0. सो डिटर्मिनेंट इतना आएगा S इंटू S प्लस 2, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लेकिन 0 इंटू माइनस 1 बिकम 0. सो डिटर्मिनेंट विल बी S इंटू S प्लस 2. नाउ वी हैव द फॉर्मूला Si minus A matrix inverse is equals to adjoint of this matrix divided by determinant. Determinant Si minus A. So this matrix I can write it like this. This is adjoint matrix. So each term will be divided by this determinant. So it becomes S plus 2 upon S into S plus 2. Second term 1 upon S into S plus 2. Third term is 0 upon this matrix become 0. Fourth term S
upon, this is s upon s into s plus 2. Now it's very simple. Let us simplify it further. We can well judge this s plus 2 gets cancelled. Here term s and s gets cancelled. So this matrix inverse is given as 1 by s first term, second term 1 by s into s plus 2, third term 0, fourth term 1 upon s plus 2. Now see, here we have to calculate the inverse Laplace of this equation. अब जिन लोगों को पता नहीं है इनवर्स लाप्लास कैसे कैलकुलेट करना है, आई ऑलरेडी क्रिएटेड द वीडियो ऑन कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन दिस वीडियो, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे हर एक टर्म का अलग अलग इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना है. रिकॉल द फॉर्मूले ऑफ इनवर्स लाप्लास. 1 by s टर्म है तो इसका इनवर्स लाप्लास होता है u of t, because Laplace transform of u of t is the unit step. Laplace transform of u of t is 1 by s, so inverse of 1 by s is u of t. You can well write here 1 in place of u of t, because amplitude of u of t is 1. That means you can consider like this, inverse of 1 by s is 1. Then this term 1 by s plus 2, I am talking about last term. For this term we have a standard formula. Its inverse is e raised to minus 2t into u of t. रिमेंबर द सिंपल फॉर्मूले. यहाँ पे अगर ऐसा टर्म है 1 अपॉन s प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 है तो इसका इनवर्स ऐसे याद रखना है. यहाँ प्लस 2 है इसलिए e रेस टू, हमेशा इनवर्स e रेस टू आएगा. e रेस टू यहाँ साइन चेंज करना है, माइनस 2 इंटू t लिखना है. u ऑफ t इज ऑप्शनल, सो यू कैन वेल राइट ओनली आंसर एज e रेस टू माइनस 2t, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज मल्टीप्लाइड विद u ऑफ t. अब ये जो टर्म है I will write it separately. So for this term 1 upon s into s plus 2, I will have to make use of partial fraction expansion to calculate the inverse Laplace. In partial fraction expansion form, it is written like this: a by s plus b by s plus 2. You can use notations a1 a2. It won't be making any difference. अब देखो ये जो टर्म है इसके रूट्स कहां पे? फर्स्ट रूट इज एट 0, बिकॉज ये टर्म सिर्फ s है. सो आई कैन वेल राइट दिस टर्म एज s माइनस 0. रूट्स मतलब आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट मेनी टाइम्स, स्टिल आई विल रिपीट इट. s जैसे यहां पे s प्लस 2 है, इसका साइन चेंज करना है तो आंसर आएगा माइनस 2. इसको बोलते हैं रूट्स और पोल्स. यहां पे s माइनस s टर्म है, आई कैन राइट इट एज s माइनस 0, सो इट्स पोल और रूट इज एट 0. सेकंड पोल जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सेकंड टर्म इज s प्लस 2. s प्लस 2 है, इसका साइन चेंज करेंगे, सो सेकंड पोल इज एट माइनस 2. दैट मीन्स सेकंड रूट इज एट माइनस 2. अब a1 कैलकुलेट करने के लिए रिकॉल द रूल्स, और a कैलकुलेट करने के लिए रूल क्या है? a का डिनोमिनेटर s है. इस इक्वेशन से s स्किप करना है, राइट डाउन द रिमेनिंग इक्वेशन दैट इज s प्लस 2. डू दिस कैलकुलेशन एट s इज इक्वल्स टू p1, मतलब p1 का वैल्यू है 0, सो पुट s इज इक्वल्स टू 0. तो ये आएगा 1 by 0 plus 2, दैट इज 1 by 2. ये आ गया आंसर a का. a इज कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन. सेम वे b का कैलकुलेशन करने के लिए b का डिनोमिनेटर s प्लस 2. फ्रॉम दिस इक्वेशन डिलीट s प्लस 2 टर्म, राइट डाउन द रिमेनिंग टर्म 1 by s. डू दिस कैलकुलेशन एट s इज इक्वल्स टू p2, मतलब s इज इक्वल्स टू माइनस 2. तो wherever s is there you will be putting s is equals to minus 2. तो सिंपल है, therefore b is equals to minus 1 by 2. So these are the values of a and b. Now if I will put the values of a and b in this equation, so I will write it over here. Therefore 1 upon s into s plus 2 can be written as value of a is 1/2 upon s minus 1/2 upon s plus 2. अब इसका इनवर्स कैसे लिखते हैं? सो इट्स इनवर्स इज, जस्ट नाउ वी डिस्कस दिस कांसेप्ट. ये 1/2 कांस्टेंट है, एज इट इज रखना है. 1 by s इसका लाप्लास इनवर्स होता है 1, दैट इज u ऑफ t, मतलब सिंपली 1 लिख सकते हैं, माइनस 1/2 एज इट इज. इसका 1 प्लस ये 1/2 बाहर लिया मैंने, s प्लस 2 का इनवर्स होता है e रेज टू माइनस 2t इंटू u ऑफ t. दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस टर्म 1 अपॉन s into s plus 2. अब लास्ट स्टेप देखो, फॉर्मूला देखो, phi of t is Laplace inverse of this matrix, that is si minus a inverse matrix का जो Laplace inverse है उसको बोलते हैं phi of t. So
फाइनल आंसर ऑफ phi of t that is state transition matrix is 1 by s का लाप्लास इनवर्स क्या है 1, सो आई विल बी राइटिंग हियर 1. सेकंड टर्म इसका इनवर्स लाप्लास हमने ये कैलकुलेट किया है, सो इट इज 1/2 into 1 that is 1/2 minus 1/2 e raised to minus 2t u of t. थर्ड टर्म 0 है, सो इसका इनवर्स लाप्लास विल बी 0. फोर्थ टर्म इसका इनवर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज e raised to minus 2t u of t. So this is the state transition matrix for the given system. Next problem, determine state transition matrix for this is the given equation. So like the previous sum, we know that this is matrix A. Up we have the matrix Si. It is same as the previous sum, that is H0 0 S. I want to obtain Si minus A, this matrix Si minus A. So it is simple, Si minus A मतलब इस मैट्रिक्स से ये सब्ट्रैक्ट करना है, so S minus 0 it becomes S 0 minus 1, this becomes minus 1, then 0 minus 8 it becomes plus 8, S minus of minus 9 this becomes S plus 9. So I have developed the matrix Si minus A. Now I want Si minus A inverse. So Si minus A inverse, we know the formula same as adjoint of matrix Si minus A divided by determinant of matrix Si minus A. Let us calculate adjoint. So adjoint matrix is, we know the rule adjoint of Si minus A. ये इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा s plus 9 ये टर्म s, और ये दोनों के साइन चेंज करने हैं, सो दिस बिकम्स +1, दिस इज -8. दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स. देन डिटरमिनेंट ऑफ Si minus A इज इक्वल्स टू, देखो ये मैट्रिक्स Si minus A है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब दिस इनटू दिस, सो इट बिकम्स s into s plus 9, this into this minus this into this, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, so it becomes +8, so it is s square plus 9s plus 8. In terms of factors it can be written as s plus 8 and s plus 1. So this is the answer of determinant matrix. Now let us obtain the Laplace transformation, that is Laplace inverse of this matrix. But before obtaining Laplace inverse, पहले ये मैट्रिक्स का इनवर्स तैयार करते हैं. मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है. We know the procedure, we know the formula. Inverse is adjoint upon determinant. ये determinant का, ये adjoint का है. तो every term like s plus 9 is divided by this. 1 is divided by these two terms. Similarly, -8 divided by this, s divided by this. So this is the matrix inverse for Si minus A. Now we have to calculate Laplace inverse of each element in this matrix. देखो फॉर्मूला क्या है, phi of t is Laplace inverse of this. So let us consider term wise separately. तो पहला टर्म ये टर्म, this is s plus 9 upon s plus 8 second bracket s plus 1. In partial fraction it is like it is written as a1 upon s plus 8 plus a2 or a or b, let us say b upon s plus 1. जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया, इसके रूट्स लिखने हैं, सो p1 इज इक्वल्स टू -8, p2 इज इक्वल्स टू -1. यू कैन वेल इंटरचेंज द पोजीशन, नो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. a कैलकुलेट करना है, सेम प्रोसीजर. a कैलकुलेट करने के लिए a का डिनोमिनेटर s plus 8 है, ये इस इक्वेशन से डिलीट करना है. राइट द रिमेनिंग इक्वेशन s plus 9 upon s plus 1. Do this calculation at s is equals to p1. a कैलकुलेट करने के लिए p1 यूज करना है, so put s is equals to -8. Therefore I will get a is equals to -8 plus 9 upon -8 plus 1. So it becomes 1 upon -7. तो a का आंसर आ गया 1 upon -7, that is -1/7. Likewise, I will be calculating value of b. अब b कैलकुलेट करने के लिए for b I have to skip b का डिनोमिनेटर s plus 1 है, ये skip करेंगे. राइट डाउन द रिमेनिंग इक्वेशन, सो s plus 9 upon s plus 8
डू दिस कैलकुलेशन, ये वर्टिकल लाइन मतलब ऐसे रेड करते हैं, डू दिस कैलकुलेशन एट एस इज इक्वल टू P2 मतलब एस इज इक्वल टू -1, बी के लिए P2 पुट करना है, P2 इज -1, सो दिस बिकम्स -1 प्लस 9 अपॉन -1 प्लस 8 विच इज 8 upon 7. So this is the answer of B. Therefore, this term it can be written as s plus 9 upon s plus 8 second bracket s plus 1 is written as a. Value of a is -1 by 7 upon s plus 8. Value of b is 8 by 7 upon s plus 1. Its inverse Laplace. इसका इनवर्स लाप्लास कैसे लिखना है? देखो, I have already told you the clue. पहला टर्म -1/7 कांस्टेंट है, ये एज इट इज रखेंगे -1/7. यहाँ s plus 8 है, so I will write it as s e raised to -8t into u of t. Even if you won't write u of t, this is okay. तो मैं सिर्फ ये ऐसे ही रखता हूँ, प्लस सेकंड कोएफिशिएंट 8/7 एज इट इज, ये s plus 1 है, so it is e raised to -1 into t. जैसे मैंने बताया u of t लिखना ऑप्शनल है. So this is इनवर्स लाप्लास ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब ये टर्म का इनवर्स लाप्लास हमने ऑब्टेन किया. नाउ कंसीडर नेक्स्ट टर्म. जैसे ये टर्म कंसीडर करते हैं, हर एक टर्म का, जैसे मैंने अभी भी बताया, हर एक टर्म का हमें इनवर्स सेपरेटली कैलकुलेट करना है. सो इट इज s plus 8 s plus 1. पोल्स के वैल्यूज वही रहेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए. P1 is -8 and P2 is -1 for each calculation of inverse Laplace. So it is written as a upon first bracket that is s plus 8 plus b upon second bracket that is s plus 1. a कैलकुलेट करने के लिए s plus 8 डिलीट करना है, राइट द रिमेनिंग इक्वेशन 1 upon s plus 1. डू दिस कैलकुलेशन एट s is equals to P1 मतलब -8, तो इसका आंसर आएगा 1 upon -8 plus 1 that is -1/7. Actually it is 1 upon -7, same as -1/7. b के लिए s plus 1 टर्म डिलीट करना है, राइट द रिमेनिंग इक्वेशन 1 upon s plus 8. डू दिस कैलकुलेशन एट s is equals to P2 मतलब -1, so this term becomes 1 upon s के बदले में -1 पुट करना है, -1 plus 8 which is 1/7. तो ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/7 into 1 upon s plus 8. सेम आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/7 upon s plus 8, one and the same thing. Sorry, it is -1/7. पहला कोएफिशिएंट है -1/7 प्लस सेकंड कोएफिशिएंट 1/7 into 1 upon s plus 1. इसका इनवर्स लाप्लास मैं डायरेक्टली ये आंसर यहाँ पे लिखता हूँ. इसका इनवर्स लाप्लास है -1/7, ये एज इट इज आएगा -1/7. ये टर्म देखो s plus 8 है, मतलब इसका लिखना है e raised to -8t. दूसरे टर्म का 1 plus 7 एज इट इज प्लस 1/7 एज इट इज 1 upon s plus ये है, इसका इनवर्स आएगा e raised to -t, that is e raised to -1t into u of t. Again u of t is optional. So this is Laplace inverse of second term in the first row. Now this term, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है. ये ऑलरेडी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में लिख के रखा है, a upon first bracket plus b upon second bracket like the previous calculation. a कैलकुलेट करने के लिए s plus 8 इस इक्वेशन से डिलीट करना है, राइट डाउन द रिमेनिंग इक्वेशन एंड डू दिस कैलकुलेशन एट s is equals to P1 मतलब -8 पुट करना है. So it becomes -8 upon -8 plus 1. So it is -8 upon -7 that is 8/7. ये a का आंसर आ गया. Likewise I have to calculate b के लिए s plus 1 डिलीट करना है, राइट द रिमेनिंग इक्वेशन -8 upon s plus 8. Do this calculation at s is equals to -1, s is equals to P2. तो ये आंसर आएगा -8 upon -1 plus 8. s के बदले में -1 पुट कर रहा हूं मैं, so it becomes -8 upon +7 that is -8/7. तो इसका इक्वेशन ऐसे लिखेंगे हम लोग 8/7 into 1 upon s plus 8 minus 8/7 into 1 upon s plus 1. इसका इनवर्स लाप्लास आई विल फिल अप इन दिस मैट्रिक्स ऑफ phi of t. ये 8/7 है, it remains as it is. This is s plus 8 मतलब like the previous case e raised to -8t -8/7. देखो कोएफिशिएंट्स वही रहने वाले हैं, s plus 1 मतलब यही कोएफिशिएंट्स आएंगे हर एक केस में, e raised to -t.
मतलब इसका और इसका लाप्लास हर एक केस में सेम रहेगा, सिर्फ कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज हो जाएंगे। नाउ कैलकुलेशन ऑफ लास्ट टर्म, इसका इनवर्स निकालना है। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन इट इन द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन फॉर्म, ए अपन फर्स्ट ब्रैकेट बी अपन सेकंड ब्रैकेट, लाइक द प्रीवियस कैलकुलेशन। ए कैलकुलेट करने के लिए s प्लस 8 डिलीट करना है, राइट द रिमेनिंग इक्वेशन s upon s plus 1, do this calculation at s is equals to p1, मतलब s is equals to -8, तो ये आएगा -8 upon -8 plus 1, so this is -8 upon -7, that is 8/7, a का वैल्यू आ गया 8/7। लाइकवाइज टू कैलकुलेट b, s plus 1 इस इक्वेशन से डिलीट करना है, रिमेनिंग इक्वेशन इज s upon s plus 8, do this calculation at s is equals to p2, मतलब -1, तो s के बदले में -1 पुट करना है, so it is -1 upon 7, so it is -1/7, ये a और b के वैल्यूज आ गए। so I can now write this equation as 8/7 into 1 upon s plus 8 minus 1/7 into 1 upon s plus 1। अब इसका इनवर्स लाप्लास, एवरीथिंग इज सिमिलर, जैसे मैंने बताया इसका इनवर्स और इसका इनवर्स सेम है, e raised to -8t into and e raised to -t, सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। सो आई विल बी राइटिंग दिस आंसर एज 8/7 e raised to -8t minus 1/7 e raised to -t। So this is the final answer. I mean, I have written all the values of inverse Laplace in terms of matrix form. This matrix is phi of t, which is called state transition matrix. So dear students, these numericals are pretty simple. Only the thing is that you need to calculate the inverse Laplace. So that's it for today's session. Thank you. Thanks a lot for watching this video.